Good morning, dear student. Today we are going to study our second chapter, Life Process in Living Organism, Part 1. In this chapters, I explain you cell division, and in cell divisions we study about the mitosis. Okay. So before cell division, first of all, I explain you about the cell. What is the structure of a cell? So all of you very well familiar with the structure of a cell. I know because we study in the 5th standard, 6th, 8th and now 9th and 10th. Okay, so in cell structure what we can see? We can see there is the outermost membrane. That outermost membrane is known as the plasma membrane, and inside a spherical structure is present. That spherical structure is known as the nucleus, and nucleus is bonded with the nuclear membrane. Okay, and inside of the nuclear membrane the material is present. That material is known as the nuclear material, and that material is also known as the genetic material. Okay, because in the process of a cell division we can study the division of nucleus and division of a cytoplasm. So the liquid substance which is present between the nuclear membrane and the plasma membrane, that liquid is known as the cytoplasm. Okay, so this is the structure of a cell. Now what is the cell? Cell is the structural and functional unit of a life. What I say is structural and functional unit of a life. So every organism is made up of a cell. Okay. So now first of all we can see why that the cell division is a necessary in an organism. We can see that is the structural and functional unit, means the structure and all the function and all the vital process which is a carry on in the living body, that is a carried out by the cell. So why the cell division is a necessary? First of all we see, first one, the new organism is a form from the existing one. In our cell theory what we study the new cell is फॉर्म बाय द एग्जिस्टिंग सेल. जब तक से पुरानी सेल नहीं होगी तब तक से न्यू सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, सो इट इज अ वेरी नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म. एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज अ प्रेजेंट देयर. पेरेंट सेल इज अ डिवाइडेड एंड दैट दे फॉर्म द डॉटर सेल. देन सेकेंड वन, अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ग्रो अप. ऑल ऑफ यू नो आवर लाइफ इज स्टार्टेड फ्रॉम द सिंगल सेल. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिंगल सेल? दैट नेम ऑफ दैट सिंगल सेल इज द जायगोट. Okay, zygote is a single diploid cell. What we say? Zygote is a single diploid cell which undergoes the division, and after the division they are form a organism. Okay, so here he say a multicellular organism is a grow up during the process of a cell division. Okay, third one, emaciated body can be restored if we are maybe some causes, if our body is damaged or injured. So by the process of cell division the healing process is going on. Okay, so cell division is a very necessary in our body. Now first of all we see the process of a cell division. In the phase cell division, cell is divided by the following phase. First phase is known as the interphase, then the M phase, then the cytokinesis. What is the means of interphase? Just we can say the new cell is formed by the existing cell. Okay, तो जो नई सेल बनी है, first of all what happen? They are grown up. वो बढ़ेगी, है ना? So when they are grown up fully, so the first phase is an interphase. In interphase what happen? They are fully mature and double the all the material which are present inside of that cell. चाहे वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल हो चाहे न्यूक्लियर मटेरियल हो, ये दोनों ही मटेरियल क्या होते हैं? डबल होते हैं. क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? अ सिंगल सेल फॉर्म द टू डॉटर सेल. ओके, वो सिंगल सेल ही स्प्लिट होती है डिवीजन के थ्रू और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रही है. अगर दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रही है तो every material which is present inside of the cell, that material is present in that daughter cell. So that process is going on in the interphase. Interphase is again subdivided into G1 phase, S phase and G2 phase. G1 phase is known as the gap phase and S phase is the synthesis phase. In that synthesis phase the DNA or all the genetic material is genetic materials are now become a double. Okay, and G2 phase is the second gap phase. By that gap phase they are enter into the M phase. Okay, now
if you want to learn what is the phases of cell division, just like I tell you interphase, M phase, then cytokinosis. So there is an abbreviation. Okay, so what is that abbreviation? Go Sally go, make cake. So go means G1 phase, Sally means S phase, G2 means go. Okay, then after that M, make, and cytokinosis is known as the cake. तो हम कैसे लर्न कर सकते हैं? Go Sally go, make cake. Okay, now come into the second phase, that is the M phase, that is also known as the karyokinosis. Karyokinosis, karyons, what is the means of karyons? Karyons means nucleus. And what's the means of kinesis? Nesis means division. So division of a nucleus is divided into 4 phases. What is the name of that phase? Prophase, metaphase, anaphase, and telophase. If you want to learn it, so there is so many abbreviation, which one you have to learn, like you have to learn. Okay, जैसे प्रोफेज के लिए मैंने लिखा है प्यूपिल, मेटाफेज के लिए लिखा है मीट, एनाफेज के लिए लिखा है एंड टीलोफेज के लिए लिखा है टॉग. सो प्यूपिल, मीट एंड टॉग. इफ यू वांट टू दिस वन, सो यू हैव टू लर्न दैट वन. नहीं तो अगर अपन और कुछ इसको अपन कर सकते हैं तो पी मैट, इसको और शॉर्ट में हम कैसे लर्न कर सकते हैं? पी मैट. तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं. ठीक है. एंड लास्ट वन इज द साइटोकाइनेसिस. सो इन द फेज ऑफ साइटोकाइनेसिस व्हाट हैपन? द डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म इज अकर्स. नाउ वी स्टार्ट टू डू स्टडी ऑफ द माइटोसिस. ओके, नाउ वी स्टडी द माइटोसिस सेल डिवीजन. So first of all we see the types of cell division. Cell is divided by two method. First one is the mitosis, second one is the meiosis. Both are the types of cell division. Okay, mitosis is again further divided into karyokinosis and cytokinosis. In karyokinosis we can see the 4 phase: prophase, metaphase, anaphase and telophase, which I am early explain you. So first of all we can see the prophase. हम सबसे पहले देखेंगे prophase. So in the stage of prophase, early prophase stage में हमको अपना सेल ऐसा दिखाई देता है. इन दैट फेज व्हाट वी कैन सी, हम लोग क्या देख रहे हैं? तो आपको न्यूक्लियर मटेरियल, एक्चुअली अपने को डिवीज़न, हम जब जैसे बोल रहे हैं कि माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कैरियोकाइनोसिस और साइटोकाइनोसिस, है ना. तो सबसे पहले कैरियोकाइनोसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में ये 4 फेजेस होंगी. और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि माइटोसिस इज अकर इन द सोमेटिक सेल एंड स्टेम सेल. अब आप पूछेंगे व्हाट इज द मीन्स ऑफ सोमेटिक सेल? तो हमारी जो बॉडी है दैट इज नोन एज द सोमा. सोमा मीन्स बॉडी. तो बॉडी की जो सेल है जो जिसमें डिवीजन की प्रोसेस होती है दैट इज माइटोसिस. एंड बाय द प्रोसेस ऑफ अ माइटोसिस सेल इज अ ग्रो, अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ अ हीलिंग इज अकर. सो ऑल दैट प्रोसेस इज अकर ड्यू टू द टाइप ऑफ अ माइटोसिस सेल डिवीजन. ओके, सो व्हाट वी कैन सी हियर, फर्स्ट फेज इन कैरियोकाइनोसिस. अब अपन देखेंगे कि कैरियोकाइनोसिस की फर्स्ट फेज. तो पहली फेज क्या है अपनी? प्रोफेज. तो प्रोफेज को हम डिवाइड करते हैं 2 इसमें, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. इन द अर्ली प्रोफेज कंडीशंस वी कैन सी द स्ट्रक्चर. इन दिस स्ट्रक्चर द अर्ली प्रोफेज इज जस्ट स्टार्ट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ अ इंटरफेज. इंटरफेज की जस्ट बाद की फेज आती है आपकी प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज आती है. तो इस प्रोफेज में हम देखते हैं कि द जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? ऑल ऑफ यू नो द क्रोमोसोम इज द जेनेटिक मटेरियल. ओके, so what happened in the structure of a chromosome? Chromosome is start to condense. All of you see in the earlier prophase the chromosome is look like a thread like structure. कैसा दिख रहा है? thread like structure. And this one is the nucleolus. क्या है ये आपका? nucleolus है ये, है ना. आप सभी को पता है what is the function of nucleolus? क्या है nucleolus का function? Nucleolus is related to the synthesis of a ribosome, है ना. And these are the chromosome. It is the thread like structure. तो ये thread like स्ट्रक्चर जो है दे आर स्टार्टेड टू कंडेंस. क्या होना चालू हो रहा है? कंडेंस होना चालू हो रहा है. और आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रियोल. सेंट्रियोल गोज अपार्ट इनटू द ऑपोजिट पोल. दोनों कहाँ जाना चालू करेंगे? ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे. ओके, सो इन द लेट प्रोफेज, जैसे ही अपन लेट प्रोफेज में आते हैं तो वी कैन सी द सो मेनी चेंजेस हियर. तो कौन कौन से चेंजेस देख रहे हैं? तो वी कैन सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टार्ट टू डिसअपियर. क्या हो गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टार्ट टू डिसअपियर. एंड क्रोमोसोम आर condensed and converted into the X structure. X type of structure. शेप कैसा हो गया इसका? X हो गया. अब मैं थोड़ा सा आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बता दूं. तो हम एक क्रोमोसोम में क्या देखते हैं?
a chromosome have a 2 arms and that 2 arms is known as the chromatid and both the arms are jointed with the same centromere. Okay, तो ये क्या है आपका centromere, क्या है ये centromere. Okay, and these arms are known as the chromatid. क्या बोल रहे हैं हम इसको? chromatid. Okay, so both arms are known as, both the arms which are joined with the same centromere, that is known as the sister chromatid. क्या बोलेंगे हम इसे? sister chromatid. अंडरस्टूड? ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज द काइनेटोकोर. ठीक है, क्या है यहाँ पे? काइनेटोकोर. तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ काइनेटोकोर? काइनेटो हु प्रोवाइड द मूवमेंट एंड कोर इज द जॉब, यानी हु प्रोवाइड द मूवमेंट ऑफ जॉब, दैट इज नोन एज द काइनेटोकोर. इसके कारण ही हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से मूवमेंट होगी. ओके, काइनेटोकोर इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन. ये एक तरह का प्रोटीन है जो सेंट्रोमियर से लगा हुआ है. तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम. क्या क्या देखने के लिए मिला हमें? क्रोमेटिड देखने के लिए मिला, सेंट्रोमियर देखने के लिए मिला. द क्रोमेटिड विच इज जॉइंड विद द सेम सेंट्रोमियर, दैट इज नोन एज द सिस्टर क्रोमेटिड. ओके, सो in late prophase the nucleolus is started to disappear, the nuclear membrane is started to disappear and our centriole, okay, यहाँ पे आप देख रहे थे they are moves to the opposite pole, so they are moves to the opposite pole. and centriole में एक tubulin proteins होती है, through that tubulin proteins what is formed? the spindle fiber is a form which we can very well seen in the metaphase. अब हम आते हैं metaphase में. so which type of a changes we can see in the metaphase? तो हम अब मेटाफेज में देख रहे हैं. यू कैन सी इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हियर? नो. व्हाट इज दिस वन? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये आपका कौन सा मेम्ब्रेन है? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, विच मेम्ब्रेन? दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. विच मेम्ब्रेन इज डिसअपियर टोटली? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. हियर दे आर स्टार्टेड टू डिसअपियर, इन द मेटाफेज दे टोटली डिसअपियर. नाउ you can see the position of a chromosome. So all of you see the chromosome is arranged into the equatorial plane, where they are arranged into the equatorial plane, and the spindle fiber is formed by the centriole and joined to the kinetochores of the centromere. किससे joined हो गए वो? kinetochores of the centromere. Okay, so this is the all this. तो क्या क्या देखा मेटाफेज में? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, centriole is reaches to the opposite pole, the formation of the spindle fiber is a start and spindle fiber is attached to the centromere of the chromosome. All this type of changes we can see in the metaphase. Okay, now we come into the एनाफेज. ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, प्रो यानी फर्स्ट होता है ना, जो हमने सबसे पहले देखा प्रो फेज में. मेटा जैसे वर्ड दिया है मेटा फेज, तो मेटा यानी मिडल होता है. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मिडल, यानी आपका क्रोमोसोम कहाँ पे आ गया है? मिडल में आ गया है. ओके, अब जैसे हम लोग आ रहे हैं एना. एना का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट. एनाफेज, एना का मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट. तो हम जैसे अब यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट इज गोइंग ऑन हियर. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये अपना क्या है भाई? ये हमारा सेंट्रियोल्स है. ओके, व्हाट इज अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रियोल्स? द स्पिंडल फाइबर्स आर अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रियोल. दैट सेंट्रियोल इज अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर. अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था द क्रोमेटिड विच आर जॉइंटेड विद द सेम सेंट्रोमियर, दैट इज नोन एज द सिस्टर क्रोमेटिड. सो हियर द शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर इज अ स्टार्ट. विच प्रोसेस इज गोइंग ऑन? शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर इज गोइंग ऑन. एज द स्पिंडल फाइबर इज अ शॉर्ट, व्हाट हैपन? the spindle fiber which is attached to the kinetochore, they are apart from each other. अब एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं. तो यहाँ देख रहे हैं अपन सिस्टर क्रोमेटिड आर मूव्स इनटू द ऑपोजिट पोल. एंड व्हाट इज विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन सी? दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. सो वी कैन कॉल दैट अ बंच ऑफ बनाना. अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड हुए. अलग अलग कौन क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड. एक ही क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड है, दे आर मूव्स टू द ऑपोजिट पोल. कहाँ गए वो? ऑपोजिट पोल. ओके, टीलोफेज यानी लास्ट. टीलो यानी होता है लास्ट. ओके, सो टीलो, इन द टीलोफेज व्हाट वी कैन सी, हम यहाँ पे देख रहे हैं अवर डिवीजन ऑफ अ न्यूक्लियस इज अ कंप्लीटेड. अब क्या क्या कंप्लीट हुआ भाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ रीअपियर. ओके, न्यूक्लियोलस इज अ रीअपियर. द
क्रोमोसोम्स आर कंप्लीटली डिवाइडेड। आपका सेंट्रियोल जो था वो उसमें से स्पिंडल फाइबर रिमूव हो गया है, आपको स्पिंडल फाइबर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और इन दैट प्लेस व्हाट वी कैन सी द डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म। सो in the process of a cytoplasm हम क्या देखते हैं, so in the up to telophase the process of karyokinesis is completed. Our nucleus is divided into two equal part, and all of you saw how many chromosomes are present in each nucleus? Two chromosome. How many chromosomes are present in the parent's nucleus? 2 chromosome. Yes na? So their number is the same. Their number is the same. So mitosis is a type of a cell division in which the number of a chromosome are remain same as the parent cell, remain same in a daughter cell as the parent cell. Understood? Okay. Now and the daughter cell is identical to the parent cell. अब अपन देखते हैं कि अभी तो हमारा न्यूक्लियस डिवीजन ही हुआ है, अब हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस. साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीजन. सो व्हेन द प्रोसेस ऑफ अ साइटोकाइनेसिस इज स्टार्टेड, सो नॉचेस इज अ फॉर्म. ये देखो इस तरह का डिप्रेशंस बन रहा है, दैट इज नोन एज द नॉचेस. ये नॉचेस क्या होते हैं? डिपर 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 होते जाते हैं. एज दे आर गोइंग डीपर एंड डीपर, सो cytoplasm is divided into two parts. So that condition is occurs in a animal cell. और plant cell में क्या बनेगा? Plant plates बनेगी, cell plate बनेगी. उस cell plate से वो दो इसमें डिवाइड होता है, और animal cell में notches बनते हैं. ओके, अब हम देख रहे हैं as the process of cytokinesis is completed, आपको 2 daughter cell मिलेगी. How many daughter cell? 2 daughter cell, and these 2 daughter cell is identical to their parent cell. Okay, so because their number are remain same, so now the process of a mitosis, cell division is completed by the karyokinesis and cytokinesis. I hope all of you understood. Thank you.